So yesterday we have completed the topic centralization and decentralization. And what we have done, instead of understanding the two concepts, centralization and decentralization separately, we have combined that and we have understood the distinction between centralization and decentralization. And with that particular topic, chapter number 3, that was organizing, it came to an end yesterday. So today we are proceeding with the last module of our Commerce 3. That chapter is very interesting and the chapter's name is Directing and Control. Now, if you remember when we started our module number 1, that was Introduction to Management, there we have learned certain definitions given by various authors. And one definition was saying that management is nothing but these are the functions which are describing how the management should be. Because some people, they may feel that planning is only management. Some people may feel that it is organizing which describes the management. Some people say it is a coordinating or the coordination which is describing the management. And some people say that no, it is not other things, but it is directing and controlling. As far as directing and controlling is concerned, both the terms are very different from one another. Directing means when you are able to give the direction to others, when you are able to guide some other person. And it is not like only guiding, you have to see that the other person is following your instructions. And if the other person is not following your instruction, that means the work will not get achieved, right? You are guiding your subordinates that this is how we have to work, this is how we have to achieve our objectives. And these subordinates, either they are not understanding you or they are not listening you. These are the two different things. Understanding means they are ready to work, but they are not able to understand what direction you are showing to them, how to go ahead. Another one is they are not ready to listen to you. Listen to you means they are understanding that what they are supposed to do, but they are not ready to cooperate with you. They are not ready to see that what you are saying that they are following. There may be n number of reasons for that. So that is called as directing. That is an art. When you are directing someone and when you see that the person is following your instructions and he is giving you the objective which you are looking for, that is called as directing. And controlling is something else. Controlling is a technique where you are able to see that where the errors are going on, where the mistakes are going on, where something the people are not doing correctly. So when you are able to identify that and when you are able to rectify that, that is called as control. So these are the two different terms, two different things, and management requires this. Every kind of management, let it be small scale business organizations management or the large scale business organization management, everywhere this is required. Even in our personal lives also, we need some directions, we need some controlling authority on us. Now, you can see that, when you were in school, your teachers used to guide you that, after 10th, which course will be beneficial for you. Sometime you might have felt that, "Arey, teacher kya bol raha hai? Science to mujhe aata bhi nahi hai." What kind of direction the teacher is giving? Teacher ko kya malum? Problem kya hai mujhe saath? That you are feeling. Some people are very religiously listening to teachers and they are following it and they are getting success also. Because when an experienced person is sharing their experience with you, you are actually enjoying the benefit of experience of other person. अगर एक 50 years का person आपको अपनी life share करता है, अपनी experience बताता है, तो आपने 50 साल की life जी ली, आपको वो उतना experience मिल गया, तो आपसे कभी भी 20 साल की एज में वो गलती नहीं होगी जो उस पर्सन ने की. Because he is telling you that what sort of mistakes he has done in selecting the career, and then he is asking you not to go for that particular course. This particular course is better for you, to go ahead with it. So sometimes you may feel that अरे वो उसको कुछ नहीं मिला तो मुझे भी ऐसा बोल रहा है. तो ये दो चीजें आ जाती. And when you are managing the people in the organization, you are having these kind of people. When you are going to work in an organization, you will come to know that there are so many type of people and maximum people are negative. It is not like that everybody will like you, everybody will listen to your instructions. No, it is not like that. You may be favorite of yours, but you may not be favorite of everyone's. Now that is a challenge for manager.
Manager have to, direct in certain way. The people should listen to him. They should follow his direction. So this direction requires one or two concepts that are related to motivation, right? So the concept of motivation is the part of direction. Motivation. It's a very general word, very common word, which every now and then we are hearing and we are using in our personal lives. Now here in the image also you can see that they are encouraging each other and they are crossing the roads. Right? So here this person who wants to cross this, he is getting encouraged by these two people and he is also trying to reach it over there. This is motivation. This is motivation. When you are encouraging someone to do something which you want to. But motivation is not only encouraging. It is not only encouraging. Because until and unless you are not having desire from inside, you will not be giving any kind of motivation to do anything. Example, suppose your parents are going out and you are having younger siblings, आपके छोटे भाई बहन हैं, and they are telling you that your parents are saying that we are going out of station for a few days. You take care of your younger brother and younger sister. But you know that they are not going to listen to you. They are, they are not following you. So you may not get any kind of interest to take care of them. You may feel that अरे खाना रखा हुआ है, खाना खा लो, पढ़ाई कर लो, like that, you will be doing that. Why? Because you are not having something from inside to take care of. Neither they are. Then you have to generate that. Until and unless your inner desire doesn't allow you to work, you will not do that. So it is our mind which is in control of in our control only. We only can direct our mind at what to listen and what not to listen. If you are following wrong ways, you are responsible. Nobody else is responsible. If you are following right path or right direction, you are responsible for it. Because it is you who is explaining yourself from inside. ये कोई ऐसी चीज है मोटिवेशन जो आपको कोई ऐसा दो कहानियां बता के या थोड़ा सा एक स्पीच देके आपको ऐसा मोटिवेट कर देगा, ऐसा नहीं. मोटिवेशन इज समथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम योर ओन डिजायर, इनर. वो अपने आप ही ड्राइव आ जाता है. ऑफ कोर्स वो लिसनिंग के बाद ही आएगा, सुनने के बाद ही आएगा. पर जब तक आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो डिजायर नहीं आएगी. Right? So when somebody is giving you some direction, when somebody is explaining you, you allow your mind to behave in a positive manner. So your mind will understand that you बोल रहा सही बोल. And then only your inner desire will come. And that is the challenge for managing. To make the person think positively from inside. And then they will start listening the manager. So motivation का मीनिंग जो हम लोग अभी सीखने वाले हैं, ये एकदम अलग मीनिंग है जो अब तक हमारे मन में था. See the meaning what is given. The term motivation has been derived from the word motive. I just underline that particular word. That can be asked in the form of MCQs. Motive, which refers to the inner drive or intention that makes a person to do something or to behave in a certain way. So it is something which is coming from your heart, which is coming from your inside feeling. It cannot be given in the form of discipline. No, that is something which comes from you. स्कूल में अगर आप 5-10 मिनट भी लेट हो जाते थे तो आपको एक पीरियड बाहर खड़ा कर देते थे. ये सजा इसके लिए दी जाती थी ताकि आपको वक्त का इंपॉर्टेंस पता चले कि अगर लेट हो जाते हैं तो सजा मिलती. पर इसमें से कई सारे बच्चे उल्टा हो जाते हैं. मतलब उनको रोज अगर सजा मिलने लगी ना कि रोज एक पीरियड लेट आना है, तो वो जानबूझ के लेट ही जाते हैं.
वो बोलते हैं वैसे भी तो एक लेक्चर मुझे बाहर ही रुकना है, तो इतना जल्दी भाग के जाने की क्या जरूरत है, पहला लेक्चर जब खत्म होने वाला होगा ना 10 मिनट पहले तो मैं जाऊंगा। ऐसे भी लोग हैं। आप अपने बारे में भी कर सकते हो, ये चीज आपके मन में भी कभी आई होगी। तो ये मतलब आपने क्या सोचा कि लेट जाना मतलब एक मेरे लिए पनिशमेंट का काम है और मुझे उसकी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन आप में से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उस बात की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए लेट नहीं जाना है। कल मुझे लेट हुआ था, आज मुझे लेट नहीं जाना है, आज मुझे कैसे भी करके टाइम से पहले पहुंचना है। नोबडी शुड पॉइंट इट आउट। आपने भी देखा होगा जो लेट आते हैं वो रोज ही लेट आते हैं, जो टाइम पर आते हैं वो टाइम पर आते हैं। तो ये इनर ड्राइव है, समथिंग विच इज देयर इन योर इनसाइड माइंड, समथिंग विच इज मेकिंग यू टू वर्क। Sometimes this inner drive may be having push factors, sometimes it may be having pull factors. Pull factors. That means something is attracting you, and because of that, your inner mind is saying that, yes, I have to do that. Something is attracting me. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, अगर आपके पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको कहते हैं कि छोटे भाई बहन का ध्यान रखो, और आपने भी सोचा कि ठीक है इनका ध्यान रखेंगे, आपको ऐसा लगने लगा कि वो तो सुनते ही नहीं है मेरी बात, ना तो टाइम पे खाना खा रहे हैं, ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना तो घर पे बैठ रहे हैं, पूरा बाहर ही घूम रहे हैं। तो आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, लाइक ना उनसे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, उनको बोलना पड़ेगा कि देखो मम्मी डैडी आएंगे तो हम लोग भी कहीं बाहर घूमने जाएंगे, आई विल टेक यू टू माय फ्रेंड्स हाउस एंड ऑल। ये सब आप चीजें बोलेंगे तो वो आपकी बात को थोड़ा सुनेंगे। तो इसको बोलते हैं पुल फैक्टर्स। वो कोई चीज उनको अट्रैक्ट करे, खींच रही है कि हाँ ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मुझे कहीं घुमाने लेके जाने वाले हैं, अगर मैंने ठीक से उनकी बात सुनी तो, अगर होमवर्क कर दिया तो मुझे अच्छा खाने को मिलेगा, मुझे कहीं बाहर जाने भी देंगे, मुझे यहाँ पे खेलने के लिए जाने देंगे। ये होते हैं पुल फैक्टर्स, समथिंग विच इज अट्रैक्टिंग। एंड समटाइम इट इज अ पुश फैक्टर्स व्हेन समथिंग कम्स इन योर माइंड, अरे अगर मैंने ये अचीव कर लिया ना तो फिर मेरे लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा। अगर आप में से कई सारे बच्चों ने सोचा हुआ है कि अगर ग्रेजुएशन में मुझे ए ग्रेड आ गया तो इट इज इजी फॉर मी टू टेक एडमिशन फॉर द हायर एजुकेशन इन एनी अदर इंस्टीट्यूशन आल्सो। So you may be having that push factors. Push factors comes from you and pull factors are outside. Right. Now here the question arises, when the manager is trying to motivate the employees, what measures he has to use it? क्या क्या तरीके उसे यूज करने चाहिए ताकि लोग उसकी बात को सुने और जो काम वो उन्हें दे रहा है वो रिलीजियसली उसे फॉलो करके कंप्लीट कर दें। सो फॉर हिम there are certain factors which are helping him, and generally he is making use of the pull factors. Something, some greed he is giving them, some target he is giving them कि देखो अगर आपने आज का ये सेल अचीव कर लिया ना तो आपको 10% एक्स्ट्रा कमीशन दे देंगे। तो ये पुल फैक्टर है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो सेल ज्यादा नहीं कर। या फिर आप उसको बोल देते हैं कि अगर आज का ये काम खत्म हो गया ना देन 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाएगी, तुम्हें घर पे आराम करो, लेकिन ये काम खत्म करो, 12 घंटे लगता है, 16 घंटे लगते हैं, काम खत्म करो। तो उस लालच में आके वो पर्सन टाइम देखेगा ही नहीं, बिकॉज ही नोज दैट ही इज गोइंग टू गेट 2 days एक्स्ट्रा ऑफ। तो बोलेगा अरे 2 दिन आराम करने के लिए मिल जाएगा ना, तो अभी मैं काम कर लेता हूँ, 24 घंटे भी काम करेगा, शायद ऐसा भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज पुल फैक्टर्स, दैट मोस्टली दे आर यूजिंग इट। देन फॉर पुश फैक्टर्स, किसी को अंदर से पुश कराना, दैट विल बी लीडरशिप। वही टॉपिक हमारा आगे आने वाला है, लीडरशिप। लीडर इज अ पर्सन हु लीड्स यू, लीडर इज अ पर्सन टू whom you are following, leader is a person who is inculcating the quality to follow the instructions even without thinking। तो वो अंदर से आपको आता है कि आपका एक भरोसा बैठ जाता है कि ये जो बंदा है ये मुझे कभी गलत सलाह नहीं देगा, मुझे इसको फॉलो करना है। तो ये हो जाता है इनर ड्राइव, मतलब पुश फैक्टर्स। सो फॉर मोटिवेशन कैन बी डन इन 2 ways, by applying the pull factors and by applying the push factors। तो ये हो जाती है मोटिवेशन की मीनिंग। सो मोटिवेशन मीन्स समथिंग which is inside you and which is encouraging you कि नहीं ये काम मुझे करना है। Many people used to come in your life, many people may tell you so many things to you that अरे बेटा ये पढ़ाई कर लो, अभी कॉमर्स किया तो सीए कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो आप कभी सुनेंगे नहीं उनकी बात, क्योंकि आपको अपनी
अपनी मन की बात बताए कि अरे मुझे अकाउंट्स तो ठीक से आता नहीं, मुझे तो जर्नल एंट्री भी ठीक से समझ नहीं आती, तो मैं सीए कैसे करूंगा, ये अंकल को ये आंटी को मैं क्या बताऊं। वो आपका जो अंदर की आवाज है वही आपको दबा रही है। तो ये मोटिवेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले तो अपने माइंड को अलाउ करना है सुनना। आप किसी की बात को सुनो, और जब आप सुनने लगोगे तो ही आप समझने लगोगे, और उसके बाद ही ये जो मोटिव है ये एक्टिवेट हो जाएगा आपके माइंड में। एंड एट दिस एज, द एज विच यू आर गोइंग थ्रू, दैट रियली रिक्वायर सम काइंड ऑफ मोटिवेशन, because this is the age which is going to decide your future, whether you are going to become successful in life, whether you are going to face failure in your life. That is the age where you are now. So allow your mind to listen to the people, allow your mind to accept the positive things, and make sure that you can do it, because you only are going to encourage you. That is the meaning of motivation. Now let us understand, if any organization which is following the motivation in their organization, what kind of benefits they are going to get. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन के फैक्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है, अभी तो होता ही, इंडिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, each and every manager, each and every superior, they are trying their level best to motivate their employees in some or other. Sometimes they are explaining them by sharing their experience. Sometimes they are giving them some sort of extra incentives. Sometimes punishment. कभी सजा के तौर पर भी मोटिवेट किया जाता है कि अगर ये टारगेट अचीव नहीं किया ना तो संडे को भी आना पड़ेगा। तो ये जो धमकी मिल जाती है ना कि संडे को भी आके काम करना पड़ेगा, उस डर से भी लोग वीकडेज में काम खत्म कर लेते। काम तो अपना मोटिवेशन से है ना, काम करके लेना है। ये इंपॉर्टेंस क्या होती है उसके, अगर कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशन फॉलो करता है तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस? फर्स्ट एडवांटेज इज हायर एफिशिएंसी. If you are having good motivating factors in your organization, it is going to encourage the people to work very hard and to give you the correct output which you are looking for. Efficiency means what? The maximum output for minimum input. कम से कम रिसोर्सेज यूज करके मैक्सिमम आउटपुट लेके आना, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी. So when you are having organized in your organization, when you are following the motivating factors, or when you are having the motivational sources in your organization, 101% you are going to get higher efficiency from your staff. Then the another advantage is innovation. See, when you are motivating the people, they share their new ideas with you. If you don't motivate them, if you are always shouting at them, "Hey, क्या काम कर रहे हो, ये क्या है, ये कचरा लेकर आ गए," they will not get encouraged in any manner. But when you are encouraging them, they will bring so many innovative ideas. उनका माइंड अपने आप ही चलने लगा। अगर आप मुझे एक प्रोजेक्ट दिखाते हो, मैंने सपोज आपको एक असाइनमेंट दे दिया, आपने मुझे प्रोजेक्ट दिखाया, उसके अंदर हेल लॉट ऑफ मिस्टेक्स है, बहुत मिस्टेक्स है, और आप जब मुझे दिखा रहे हो और मैं वो पढ़ के आपको बोलता हूँ अरे इसमें मिस्टेक्स हैं, प्यार से बता रहा हूँ और मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूँ, और आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें जो है ना इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ये चीजें आप लेके आ जाओ, लिख के बताया, तो आपको वो चीज थोड़ी सी समझ आएगी। भले आपको थोड़ा गुस्सा लगेगा कि सारे मेरे जो पॉइंट्स हैं वो तो रिजेक्ट हो गए, पर फिर भी आप अगली बार जब आएंगे ना तो अच्छे से कुछ नया प्रेजेंट करके आए। फिर जब मैं आपको इंकरेज करूंगा, आपको अप्रिशिएट करूंगा, अरे ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, ये पिक्चर तो मैंने कभी देखी नहीं है, ये कहाँ से मिला, कौन से साइट से लिया, तो ये आपको क्या लगेगा, अरे टीचर को मेरी बातें समझ आ रही, ये मेरी आइडियाज अच्छे हैं। तो फिर जब अगली बार आपको काम मिलेगा ना, आप खाना पीना भी छोड़ के आप वो चीजों करने में बैठ जाओगे। आई एम 100% श्योर यू विल डू दैट एंड यू विल इंप्रूव योरसेल्फ। आपकी क्वालिटीज 100 टाइम्स इंप्रूव हो जाएंगी। लेकिन अगर आप काम लेकर आए मेरे पास, मैंने देखा इसके अंदर तो हजारों मिस्टेक है और मैंने ऐसे फाड़ के फेंक दिया, ये क्या कचरा लेकर आए हो, किधर से भी कॉपी पेस्ट करके लेकर आ गए, ये करके आ गए, उस रात को तो आपको नींद ही नहीं आएगी, खाना वाना भी अच्छा नहीं लगेगा, और ये चीज आपको इतना डिमोटिवेट कर देगी कि अगली बार आप शायद वो काम करोगे ही नहीं। ये चीज मतलब मोटिवेशन है तो इनोवेशन है, अदरवाइज नहीं है, राइट? इनोवेशन तभी आएगी जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी, एंड दैट्स इनोवेशन ओनली
will bring success for your organization. हम लोग यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं कि उसको कैसे और आगे बढ़ाना है। तो जनरली जो मैनेजर्स रहते हैं ना, वो उस तरह से इंसल्ट नहीं करते, और अगर वो इंसल्ट कर रहा है दैट मीन्स वो अच्छा मैनेजर ही नहीं, क्योंकि एक मोटिवेटिंग मैनेजर कभी भी इंसल्ट नहीं करता। वो डांटेगा थोड़ा, कभी हो जाएगा वो, क्योंकि एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाती है सबके लाइफ में, कितना भी समझा के अगर वो फिर से वापस से गलतियां होंगी तो वो सेचुरेटेड होके शायद थोड़ा कुछ बोल भी देगा, बट ऑलवेज ही मे नॉट बी लाइक दैट. So that is called as the innovation or innovation. Then the next advantage is corporate image. The organization where the superiors are always and always shouting at the subordinates, चिल्लाते रहते हैं उनके ऊपर हमेशा। क्या आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहोगे? 101% नो. Even I will also not work under that particular superior who's always shouting on right work or wrong work. I will not prefer. But if my friend is saying that no, that particular company, no, these managers are very good. Even the owner is also very good. They are motivating the employees. Though the salary may be less, I may prefer to join over them, because I will get job satisfaction. I will get, nobody is insulting me. I am having my own dignity. I'm having my own respect, and people are respecting me. So corporate image means when you are having motivating factors or resources in the organization, your organization is getting goodwill in the market everywhere. Then the next point is teamwork. Of course, when you are motivating your employees or your staff, they start working in a team. Nobody is leaving anyone behind. हमारे स्कूल में हमारी जो 7th स्टैंडर्ड की टीचर थी, she changed my life, you can say that. Before that, I was not very good or very brilliant in studies. Of course, I used to study, but I was not very much interested in that. But 7th standard की टीचर ने, she identified the group of students and she molded everyone. उस particular batch में जितने भी बच्चे थे, सभी की लाइफ चेंज हो गई, because she was so polite, she was so decent, और हम लोग उनसे सीखते थे. तो she told me that never get jealous with anyone. और अगर कोई आपसे मार्क्स कम ले रहा है किसी सब्जेक्ट में, तो और वो सब्जेक्ट आपको आता है, आप उसको पढ़ाओ, उसको सिखाओ. that group studies and all, we understood the importance at that time. उसके पहले भी होता था ग्रुप स्टडीज, पर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ आती थी. सब लोग अपने पढ़ रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं, कोई मस्ती कर रहा है, अल्टीमेटली कोई पढ़ाई होती नहीं थी ग्रुप में. लेकिन ये मैडम ने हमें इस तरह से सिखाया कि हम एक दूसरे को हेल्प करने लगे. सो जिस सब्जेक्ट में मैं पीछे था, जो मुझे आता ही नहीं था, वो मुझे मेरे फ्रेंड सिखाने लगे, और जो सब्जेक्ट मुझे अच्छा आता था वो मैं उनको सिखाता. तो दैट टीम वर्क हैज कम. The same thing is applicable in the organization, because we people are only working in the organization. No, the mentality is the same, the nature is same. So they need motivation. They need to explain कि कोई पीछे नहीं रहना चाहिए. अगर कोई पीछे रह गया तो मतलब आप पीछे रह गए, वो आपकी टीम का हिस्सा है. तो ये सभी को encourage करके रहना, that is teamwork. And when you are having teamwork, you are going to achieve your targets and objectives in the timely manner. Then optimum use of resources. When you are having good motivating factors, all of your workers, your subordinates will try not to waste the things, क्योंकि उनके मन से ऐसा लगता है कि ये कंपनी मेरा है, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नुकसान नहीं होना चाहिए. तो जहां पे जरूरत होगी वहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, जहां पे जरूरत होगी वो कार लेके जाएंगे, जहां पे लगेगा कह रहे नहीं हम लोग ट्रेन से जा सकते हैं तो ट्रेन से चले जाएंगे. तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस हो जाएगा, खर्चे बच जाएंगे. That is the thing for motivation. Then the next one is reduction in absenteeism. If the subordinates are motivated, they would not try to take the maximum number of leaves from the office. They would try to attend office every day. In fact, कई तो ऐसे लोग रहते हैं जिनको अगर आप संडेज को भी बुलाएंगे ना छुट्टी वाले दिन, तो भी आ जाते हैं आराम से काम करने के. एक वेब सीरीज है, I think it is on YouTube only, Cubicles. मैंने शायद पहले भी बताया आपको उसके बारे में. Cubicles. It's a story of one engineer who is getting job in one big city, and the first time he is visiting that big city and how he is working over there. वो उसकी जो बॉस है वो कैसे उनको encourage करती है, किस तरह से उनकी मीटिंग्स में उनको appreciate करते हैं, कभी थोड़ा डांटती भी है. तो ये absenteeism कम हो जाता है उससे. मतलब you are able to see that the subordinates are present
when you need them. When you need them, they are there. So that is reduction in absenteeism. That is going to help the organization in all the manner. Then the next is reduction in labor turnover. Labor turnover means people are coming and going. That is turnover. In accountancy, normally turnover meaning we just take out as a sales, right? But that is not the correct meaning of turnover. Turnover means the things are coming and they are going out, coming and going out. That is turnover. So when we talk about labor turnover, that means people are joining your organization, they are working with you, and after a few months they just leave. Right. So again, you have to appoint the new people. And again, it is very difficult to work with the new people because they need guidance continuously. Again, when they will learn the things, again, they will leave. So that should not happen. So if your organization is having motivating managers or factors, then it is going to reduce the labor turnover. People would prefer to continue your organization for years together. Right. So that is the advantage which you are going to enjoy from motivation. Then the last one is better relation. Of course, when you are having motivating manager, it is going to have a better relation, and that is required actually. That is going to encourage the people to work for the organization. That is better relation. So all these are the benefits of motivation, right? So this topic is not over, still some part is there, but time is not permitting me to go ahead with it. So tomorrow or in our next period, we will continue the same topic with the factors affecting motivation. So I just stop the screen at this point.